Welcome in this session. In today's session, we will learn about electromeric effect and mesomeric effect. In the continuation of our classes regarding reactive intermediates, in the previous few sessions, we are learning the structural effects in the molecule which are governing the chemical properties and reactivity of molecule. So, in the continuation of that subject, we have learned in previous session the inductive effect, then we learned the hyperconjugation, and in continuation of that we will learn today the electromeric effect and mesomeric effect. So let us start with the electromeric effect. What is special about electromeric effect that make it different from the inductive and hyperconjugation? That electromeric effect is purely a temporary effect. It is not permanent. This effect arises in molecule in presence of certain reagents. This is the first thing to learn, that this effect is temporary effect. And the second important point regarding electromeric effect is it occurs in the molecules which has multiple bonds, whether double or triple. It does not have in compounds with only single bonds. So this electromeric effect is the property of the pi bonds, not sigma electron. As in the case of inductive effect, it was with the sigma electron, but in the electromeric effect, it is with the pi electron. So what happens? First understand, let us see via example that if we have this we have this alkene, and in this alkene or double bond, if we have certain electrophile, whether say here we have H plus, then in the presence of this electrophile, this pi electron will polarize, because they are loosely bound and they are free to move. They will polarize and they will attach with the electrophile, and this will generate a positive charge on this carbon. So this is purely temporary. This positive charge is not going to stuck with the carbon, because in later stage in the reaction, this positively charged carbon will react with the nucleophile. So this is temporary, and this occurs only in presence of certain reagents like electrophile or nucleophile. So you can say that the effect which causes the temporary polarization, see here, the effect which causes the temporary polarization in the substrate molecule and at the state of multiple bond by shifting an electron pair from one atom to other atom under the influence of reagent. When this electrophile is influenced in this molecule, this pi bond is shifted from one carbon to other carbon, and this generate a positive charge on the carbon. So in this way, this can be of two types, whether electrophile is reacting or nucleophile is reacting. So if electrophile is reacting, it will generate a positive charge. So this is known as positive electromeric effect. And if nucleophile is reacting, it will generate a negative charge. As you see here, the cyanide ion will give the electrons to electron deficient carbon, and this generates a formal negative charge on the carbon, and this is known as negative electromeric effect. So as you can see here, that electromeric effect is purely temporary. It occurs in the compounds having a multiple bond, and it occurs only in presence of certain reagents. So our temporary effect which cause the extreme polarity on atoms joined by multiple bonds owing to complete transfer of pi electron to one or the other atoms under influence of electrophile. जब electrophile approach करेगा या nucleophile approach करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज हो जाएंगे एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, और जब वो पोलराइज होंगे तो
ये जो इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका एप्लीकेशन मैकेनिज्म डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। While writing the mechanism, electromeric effect charge is represented by curved arrows. We use the curved arrows pointing away from the center of the pi bond towards the carbon that gains the electron pair. तो ये बात हुई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, जो कि पूरा डिफरेंट है इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब एक अलग टाइप का इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको कभी कभी हम कॉन्जुगेशन भी कह देते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ये अलग तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए क्या जरूरी है? द एसेंशियल कंडीशन फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट इज वी मस्ट हैव some group or atom attached with the multiple bond which can undergo the conjugation. Like, let's say for example, when electron releasing or electron withdrawing group is attached with the pi bond, जैसे इस मॉलिक्यूल में देखिए, you can see here that you have acrylaldehyde. Here we have the pi bond and the carbonyl group, and this pi bond is in conjugation with this carbonyl group, and this carbonyl group is known as electron withdrawing group. So what carbonyl group is going to do in this molecule? It will pull the pi electron because they are loosely bound, and this carbon being more electronegative, these pi electrons will shift towards this carbon, leading a minus charge on the oxygen, and this pi bond will also shift to other carbon, leaving a plus charge on the carbon. So this is something related with the resonating structure or resonance. So these structures, because they are, you see there are double headed arrows, इधर भी है इधर भी है, तो they can be a type of resonating structure. But इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से दूर भी जा सकता है, जैसे इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वंस इट इज पुलिंग आउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोइंग अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल, एंड व्हेन इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल इट इज नोन एज माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड व्हेन इट इज coming inside the molecule it is known as positive mesomeric effect. We will see in several examples, but these are the typical to make you understand that this effect can be of two types. In one type we have electron releasing group. Here the fluorine, it has lone pair, it will donate the lone pair inside molecule, and this will generate the minus charge on the carbon. But on the other hand, if we have electron attracting group, withdrawing group, it will pull out the electron density from the molecule, and this will generate a positive charge on the carbon. So these are the two different types of mesomeric effect. So in the whole molecule, this polarization can be transferred further via pi electron. Suppose if we have any other pi bond in conjugation with this, that can also undergo this mesomeric effect. This can transfer. But the main thing यहाँ पे ध्यान क्या देना है, इंडक्टिव इफेक्ट में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाज गोइंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड, उसमें सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रही थी, मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड के थ्रू हो रही। ये डिफरेंस है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो। सो मेसोमेरिक इफेक्ट लाइक द इंडक्टिव इफेक्ट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ का हो सकता है, जैसे अभी आपको बताया, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव। सपोज इफ वी हैव सर्टेन ग्रुप्स लाइक दिस अमीन और हाइड्रोक्सी और मिथॉक्सी और सम amide derivative, in all these molecules we have the lone pair on the heteroatom, on nitrogen or oxygen. So these lone pairs are available to induce the electron density in the molecule. So once
You can see here, suppose we have the chlorine, it has the lone pair, it will donate the electron in the molecule, so this will increase the electron density in molecule. So this type of effect is known as plus M effect, and these groups are known to be groups which induce plus mesomeric effect. दूसरा क्या रास्ता हो सकता है, देखिए, the other way is if we have certain group which pull out the electron density, like nitro. Here you see we have nitro, and this nitro has the capacity to attract the electron, to withdraw the electron from the molecule. So once nitro is attached from this carbon, this will withdraw these pi electrons from here, and once it will withdraw, we will have the positive charge generated on the carbon. So this type of effect is known as minus M effect. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो माइनस एम इफेक्ट कॉज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट कॉज करते हैं, एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस मेसोमेरिक इफेक्ट, इसका परिणाम क्या होता है अगर ये मॉलिक्यूल में है और हमारे पास अगर कार्बोनिल ग्रुप है, जैसा यहाँ पर देखा गया, कार्बोनिल पे अगर एडिशन रिएक्शन हो रही है तो 1-2 एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए, बट अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो इट कैन आल्सो गिव 1-4 एडिशन रिएक्शन। तो ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। तो वी हैव सीन इन दिस वे द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स। फर्स्ट वी सी द इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फोर्थ मेसोमेरिक इफेक्ट। इन चारों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी बॉन्ड, इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज प्योरली टेम्पररी इफेक्ट एंड इट अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रिएजेंट, एंड दिस मेसोमेरिक इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू पाई बॉन्ड। तो ये चारों में डिफरेंस क्लियर है आपको। अब इसके अलावा हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में क्या पढ़ा, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल्स, देन कार्बिन। ये 4 रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ लिए और 4 फील्ड इफेक्ट पढ़ लिए। नाउ वी विल अप्लाई बोथ of the concepts to see how the chemical reactions are going on or take place in the solution, and how we can justify the reaction by mechanism, and what are the rules that are helpful in describing the mechanisms of reaction. So basically, starting from now, we will able to understand the reaction mechanisms of organic reaction. So this is all for today's session, and in the next session I will start the substitution reactions. So thank you very much.